So do you remember that we derived for simple pendulum time period 2 pi L by G. Using translational, considering it to be a translational SHM. We can do the derivation using considering it to be a angular SHM also, because actually it's an angular SHM. हाँ, अगर थीटा ज्यादा जाता है तो फिर वापस चलेंगे. तो यदि इसे यहाँ पे m है, इसे हमने रोटेट किया, ओके गुराशीष, yes, by some angle. Let's say this angle is theta and theta is small. right. Got it? So since theta is small, so I can write this equation, or I can simply write that in equilibrium. So in equilibrium, no torque. Fine, because there is T acting upward, mg acting downward. Yes. And both these forces are acting through this point. Let's call this point as P. T and mg are passing through the point P. So there will be no torque in equilibrium. Right. If displaced by theta. So when I displace it by theta, mg is downward, tension is in this direction. Now I see that this point P, tension passes through point P. So there will be no torque due to tension about point P. Right. And so net torque here, Gurashish, is mg into perpendicular distance. Let's say this angle is theta and this length is L. So this is L sin theta. So torque is mg into L sin theta about point P. If theta is small, so sin theta will be nearly equal to theta for small angle. So torque is equal to mgl into theta. So now I have proved that torque is proportional to theta. So this is SHM. Yes. Fine. So mgl, so alpha is equal to mgl I into theta. ये एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे तो अल्फा जो हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, ये सिंपली ml स्क्वायर हो जाएगा. So this m gets cancelled out and we have alpha as g by L into theta. So हम कंपेयर करेंगे इसे alpha is equal to omega square theta से. So basically omega is g by L under root. तो ये छोटा एंगल ऑसिलेट कर रहा होगा, वो जो इक्वेशन में ये वाला है वेलोसिटी a थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई. सो ये जो गुराशीस कॉस है, इस कॉस और ये जो एंगल ओमेगा t प्लस फाई है, दिस इज नॉट दिस एंगल थीटा. आप इस ओमेगा t प्लस फाई को इस एंगल थीटा से कंफ्यूज कर लिया. नहीं, मैं वैसे सोच के रहा था, आपने एक बारी वो केस नहीं बताया था जिसमें एक सर्कल में जाता रहता है पार्टिकल. हाँ, तो और ओके, वो मैंने कंपेयर किया था कि ऐसा आप सोच सकते हैं. ओके, ऐसा होगा नहीं. यू कैन कंपेयर इट विथ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, so that it helps you understand the concept of phase and phase constant. SHM के लिए to and fro motion होना है. SHM के लिए फोर्स को x से या फोर्स को थीटा से प्रोपोर्शनल होना है. इसीलिए हर बार मैं ये प्रूफ करता हूँ ना कि टॉर्क इज इक्वल टू थीटा, फोर्स इज इक्वल टू x. That means I am proving that it is an SHM. Right. Once I prove that it is an SHM, then I am in a condition to use the formula that T is equal to 2 pi by omega. If I am not able to prove this, I will not use 2 pi by omega for that formula. So the whole purpose of this derivation is to show you that torque or the force, torque or the force is dependent on x or theta. The moment I show that, it becomes a SHM. Right. ठीक है, तभी मैं 2 पाई बाय ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर पाता हूँ. आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग? F इज टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा. ठीक है, इसमें और इस इक्वेशन में फर्क. ठीक है,
दिस इज एन इक्वेशन विच इज टेलिंग अस, जो कि मतलब एक एंगुलर एसएचएम को मतलब एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें वो कर दिया है। मतलब ये जो इक्वेशन होता है ये बताता है कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज एसएचएम, नॉट सर्कुलर, इंटायर सर्कुलर मोशन इज एसएचएम। यदि आप सपोज गुरशीष, लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट। सपोज देयर इज अ पार्टिकल हियर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? यू थ्रो लाइट फ्रॉम हियर, आप यहां से लाइट फेंकते हैं, लाइट। तो ये जो पार्टिकल है इसका यहाँ पे शैडो बनेगा। हाँ, राइट। इफ आई हैव पुट अ स्क्रीन हियर ऑन द वाई एक्सिस, नाइस, दिस शैडो इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर वर्ड यूज करते हैं ना, प्रोजेक्टर। तो वो क्या होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका स्क्रीन पे हम इमेज ले रहे होते हैं using an instrument called as projector. right. So when I say projection, that means I am taking a shadow on y-axis. अब जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर मूव करेगा, ये शैडो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। Okay. जब ये पार्टिकल इस साइड आके नीचे मूव करेगा, ये शैडो नीचे मूव करेगा। Right. जब ये पार्टिकल इधर आके इधर की तरफ जा रहा होगा, ये पार्टिकल नीचे ही जा रहा होगा। जब ये इधर की तरफ ऊपर जा रहा होगा, तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। Right. So we say that projection is performing simple harmonic motion, to and fro motion, when the particle is rotating in a circle. Right. Got it? ठीक है। तो बेसिकली यदि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये y साइन, और ये r है, तो ये r साइन थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन का वैल्यू जो है वो r साइन थीटा। हाँ, ये भी ले सकते थे, ये वाला भी एसएचएम मान सकते थे। ये भी टू एंड फ्रो, यदि लाइट ऊपर से फॉल कर रहा है तो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे। मैंने वाई एक्सिस का क्यों लिया? क्योंकि वाई एक्सिस इज एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स एक्सिस पे जो एसएचएम है, इट इज एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। राइट। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था इस सर्कुलर? नाउ लेट्स टेक another thing which is called as physical pendulum. What is physical pendulum? You have any idea? देखिए, पेंडुलम वर्ड कहाँ कहाँ पे आएगा? सिंपल पेंडुलम एक सुनेंगे आप, एक आप कोनिकल पेंडुलम सुनेंगे, ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम सुनेंगे, जहाँ पे 1 सेकेंड टाइम पीरियड होता है। देन आप फिजिकल पेंडुलम सुनेंगे। कोनिकल पेंडुलम ये होता है, एक पार्टिकल ऐसे करके है और ये इस तरह से मूव कर रहा है सर्कल। दिस इज कोनिकल पेंडुलम। तो वो तो एसएचएम कर भी नहीं रहा होता है, वो सर्कुलर। तो फिजिकल पेंडुलम जो होता है, एनी ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग ऑसिलेशन, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लाइक से दिस इज अ पेन। मैंने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, रिलीज कर दिया, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। दिस इज अ फिजिकल पेंडुलम। You go outside, you come home, there's an umbrella in your hand, you hang it on a nail and you displace it slightly and release it. That umbrella will start oscillating. That is a physical pendulum. Right. People wear earrings, they walk, that earrings oscillate in their ear. That is the physical pendulum. Understood? Yes, sir. So Gurash's physical pendulum, any object undergoing oscillation is a physical pendulum. Now, तो देखिए Gurashis, suppose I take an object like this. Let's say I make an object like this. This object is hanging from a point, hinge. Let's call this as point P. Yes. तो जब ये hang कर रहा होगा, तो let's say center of mass exactly point P के नीचे होगा. Let's say hanging point and center of mass के बीच का जो distance है वो D है. ठीक है. Now you displace
और रोटेट इट बाय सम एंगल थीटा। राइट। आपने इसे कुछ एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, सेंटर ऑफ मास पॉइंट पी, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। राइट। सो पहले जो mg था वो इधर से पास कर रहा था, अब जो mg होगा वो इधर से पास कर रहा है। सो इस mg के कारण एक टॉर्क लग रहा होगा। सो इन इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इन इक्विलिब्रियम नो टॉर्क, इसीलिए कोई वो नहीं है, क्योंकि mg इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन, सो देयर विल बी नो टॉर्क। इफ डिस्प्लेस्ड बाय थीटा, if displaced by theta, तो mg sin theta into r, mg sin theta into d. Fine. For small theta, for small theta is equal to theta, I can say torque is minus mgd into theta, because this torque will try to bring it back to its initial position. So theta is in this direction, torque is opposite to theta, so I put a minus sign. Right. So I can say that alpha is minus mgd upon I into theta, where I is the moment of inertia. Right. So I have shown it that it is proportional to theta, so it is an SHM. Okay. So now I'll compare this, compare with alpha is equal to minus omega square theta. So omega comes out to be mgd upon I under root. So time period is 2 pi by omega. That is 2 pi I upon mgd. Got it? This is the time period of physical pendulum.